Hello, Class 11th. Today we'll be doing The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. Okay, so as it is written over there, this story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmark are trust and honesty. Okay, so before starting the chapter, let me give a brief introduction or say a background where the story is being set. The story is post Armenian massacre. There was a massacre. See, these things are not important from your exam point of view, but I'm telling you just for your information so that you may relate the story by the timeline. So the story is set after the Armenian massacre by Turkish government in somewhat 1915, where many Armenian people were forced to relocate. So this is the story of one of the Armenian family belonging to a tribe known as Garugulanian, which was famous for trust and honesty, as it's written over here. And as we move further in the chapter, there are certain layers that we unfold about the high hopes and aspiration of the little boys, two boys actually. And we'll also be learning about different type of characters coming up in this story. Some are a bit crazy, some are good, so on and so forth. So without wasting time, we'll start with this chapter. One day back there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. So there's one boy with name Arham. He's narrating the story when he used to be 9. जब वो 9 साल का था तब उसके साथ उसकी लाइफ में जो इवेंट हुआ था, he is narrating this to the readers. So when he was 9 and the world was full of every imaginable thing, so now when he was young, and everyone when he or she is young, we haven't seen lot of things. So what we do is we imagine things, we imagine lot of things. What we see हमें पता नहीं रहता उसका use, but what we do is we imagine kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. And yes, of course, when the children are young, the life is full of delightful thoughts, mysteries, because at that point of time they're not knowing many things. So what they do is they just imagine, they live in the world of magnificence and mystery and imaginable things. My cousin Murad, who had considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning. So now there is another chapter being introduced, which is Murad. So Murad was the narrator's cousin. Narrator's name was Arham. He's the protagonist or the main character, and Murad is his brother, who was considered crazy by everyone. So Murad is considered to be crazy by everyone who knew him except me. Only Arham used to think that he was not crazy. Apart from him, everyone thinks that Murad was crazy. So one fine morning, Murad came to Arham's house at 4 in the morning, and he woke him up by tapping the window of my room. So he knocks the window of his room and he woke him up. Arham, he said. Now who said this? Murad. I jumped out of bed and looked out of the window. So it was early morning. He get off his bed and looked out of the window. I could not believe what I saw. So what he saw was very fascinating. He could not believe his eyes, what he was just watching. It wasn't morning yet. It wasn't morning yet मतलब यहाँ 4 तो बज चुका था, but the sun has not risen up. Sun अभी तक ऊपर नहीं आया था. That's why he says that it wasn't morning yet, because sun has not risen. But it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light. But it was daybreak. That is कि बहुत एक पतली सी gleam of light of sun is coming, and it's daybreak in some of the corner of the world. किसी न किसी corner में day निकल रहा था. Enough for me to know I wasn't dreaming.
और इतनी लाइट हो चुकी थी कि अब वो ये समझ पा रहा था दैट वाज not a dream which he was looking at. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. So, what he sees, he watched his brother sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. So he was mesmerized at the sight which he was seeing. He was very happy, he was very overwhelmed with joy to see his brother sitting on a beautiful white horse. So he popped his head out of the window and he rubbed his eyes just to make sure whether he was dreaming or not. Yes, he said in Armenian, "It's a horse. You're not dreaming. Make it quick if you want to ride." So Murad said in his Armenian language that yes, you are right, Aram, it's a horse, and if you want to ride, just come out fast. So why had he came? Murad came there to invite Aram for the horse ride. तो वहाँ पे वो horse ride के लिए उसको बुलाने के लिए आया था. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into this world by mistake. Okay, so now Aram is explaining what kind of a person Murad is. तो वो बोलता है कि Murad is a kind of a person who loves to enjoy his life and he is very much into exciting things और वो हमेशा लाइफ फील करता है, उसकी लाइफ में बहुत किक हैगी than anybody else who had fallen into this world by mistake. और जितने भी लोगों को वो जानता था around him, the people around him, out of them, he thinks Murad was the person who is very much alive in the sense of enjoyment and all. He enjoys every single day of his life. But this was more than even I could believe. लेकिन अब जो वो देख रहा था, it was hard for him to believe because he was very delighted. He was joyful and jovial to see a beautiful white horse. In the first place, my earliest memories had been memories of horse, and my first longing had been longing to ride. Okay, unlike every youngster, like if we just think about us only, हम सबके कोई ना कोई डिज़ायर होते हैं like to get a good bike, ride a bike and all. So likewise, ये जो आरम है इसके भी अपने चाइल्डहुड डिज़ायर्स थे, इनके चाइल्डहुड फैंटसीज थी. और क्या थी उसकी जो अर्लीस्ट मेमोरीज क्या थी उसकी? हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स. मतलब वो बचपन से ही, अभी भी वो बच्चा था, बट सिंस वेरी चाइल्डहुड ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट हॉर्स. और उसकी जो फर्स्ट लॉन्गिंग थी, जो उसका फर्स्ट डिज़ायर था, हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड. और वो हमेशा से चाहता था कि वो राइड करे, हॉर्स राइड करे. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर. तो जो अच्छी चीज़ थी वो तो उसका ड्रीम था, उसके डिज़ायर्स थे. क्या थे वो? टू गेट अ हॉर्स, टू राइड अ हॉर्स. दैट वाज अ ब्यूटिफुल थिंग, दैट वाज अ ब्यूटिफुल पार्ट. But this beautiful part could not be fulfilled as in the second place we were poor, because the tribe which they belonged to was a very poor tribe. वो बहुत गरीब और downtrodden जो उनकी tribe थी वो थी. This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. और यही वजह थी that he was unable to believe what he was just seeing. We were poor because they were poor. We had no money. Our whole tribe was poverty stricken. और वो लोग बहुत गरीब थे. उनकी जो पूरी ट्राइब थी was poverty stricken. वो गरीब थी. Every branch of Gargulonian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. और सिर्फ वही नहीं, लेकिन जितनी भी उनकी जो ट्राइब थी, जो जिस ट्राइब से वो आते थे, आर्मेनियन ट्राइब से वो आते थे, और उसकी जो ब्रांच थी गैरोगुलोनियन फैमिली, जो उनका जो सरनेम था गैरोगुलोनियन फैमिली, वो लोग बहुत गरीब थे. और जहाँ जहाँ पे भी वो रिलोकेट हुए थे आफ्टर द मैसेकर, वो हर जगह पे वो पॉवर्टी स्ट्रिकन थे, गरीब रह रहे थे. बिकॉज पहले वो अमीर रहे होंगे, बट व्हेन दे वर ड्रिवन आउट ऑफ देयर होम प्लेसेस, देयर होम लैंड, उसके बाद दे वर अनेबल टू बिल्ड अप अ गुड economical structure for themselves. That's why they're living in a very downtrodden and poverty stricken surroundings. और वो बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहे थे
and that poverty of them were very comical. वो बहुत मजाकिया तरीके से थी. Nobody could understand where we were, got money enough to keep us with food in our bellies. And no one in the Garugulanian family was aware that from where they were getting the food. They were getting money to keep their belly full. That is, they were so poor that's very hard for them to even get a day meal. लेकिन फिर भी उनके पास कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे so that they can get their bellies full. अपने पेट भर लेते थे. Not even the old man of the family. और ये सिर्फ बच्चे ही नहीं समझ पाते थे कि कहाँ से आता था. Even the older people of their families were unable to know where they were getting money. ये थोड़ा सा hyperbole है, exaggeration है of the event. Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries. Okay, so now there is one more thing about Garriglonian family which we have read earlier. They were poor, and on that they were honest. And not just they were honest, they were known for their honesty and truthfulness for somewhat 11 centuries. Like ये लोग बहुत मतलब ये लोग हमेशा से ही honest रहे हैं. People used to aspire from them. वो उन्हें देख के सीखते थे. और they used to give examples of their honesty and truthfulness. तो इस तरह की फैमिली से ये दोनों भाई अरम और मुराद आते थे. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. We were poor first, honest next, and after that we believe in right and wrong. They were not honest now, but when they used to be wealthy and when they were in their home land, तब भी जब वो लोग wealthy थे, तब भी उनके लिए सबसे important चीज़ क्या थी? The first thing that was very much important for them was they were proud first and then honest next, and after that we believe in right and wrong. That is कि वो हमेशा से ही ट्रुथफुल थे, ऑनेस्ट थे, अपराइट थे, और लोग उनके इसी ऑनेस्टी की और उनकी यही ईमानदारी की वो हमेशा से तारीफ़ करते थे, उन्हें एडमायर करते थे. सो when they used to be wealthy enough, तब भी वो लोग proud first थे, honest थे, and they believe in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world. और कोई भी उनकी फैमिली में से किसी भी इंसान का फ़ायदा नहीं उठा सकता था, let alone stealing. तो स्टीलिंग तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी, वो जो कभी नहीं कर सकते थे. तो ये थॉट था. अब ये सारे थॉट उसके अरहम के दिमाग में क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ही वॉज लुकिंग एट अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स एंड मुराद वॉज राइडिंग दैट हॉर्स. And as they come from a very downtrodden and poor family, it was very hard and very difficult for them to afford such a beautiful horse. तो आगे बढ़ते हैं. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it, so now he was in a dilemma now. Why? Because his childhood fantasy and childhood memories were of a beautiful white horse. Of a horse. वो हमेशा से चाहता था कि वो horse ride करे, and in his oldest memory he only thinks about a horse. और दूसरी चीज़ क्या थी? He was in a dilemma that from where Murad have arranged such a beautiful horse. तो इसी पे वो बोलता है, Consequently, even though I could see a horse, हालांकि वो देख रहा था उस horse को, यहाँ कि वो देख नहीं रहा था. इवन ही कुड स्मेल द ब्यूटी ऑफ दैट हॉर्स. वो इतना एक्साइटेड था हॉर्स को देख के, और उसको इतना प्लेजेंट लग रहा था कि वो उस चीज़ को स्मेल कर पा रहा था. ही कुड स्मेल इट एंड हियर इट ब्रीदिंग. वो उसको देख पा रहा था. सो लवली इवन दो आई कुड हेयर इट्स ब्रीदिंग. और यहाँ तक कि वो उसकी जो ब्रीदिंग की, जो स्नोरिंग की जो उसकी साउंड थी, वो भी वो सुन पा रहा था. सो एक्साइटिंग. I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family. So now, here comes the fact कि उस हॉर्स को देख के वो इतना ज़्यादा परेशान था, mesmerized था. He was
there was a mixture of emotions running through his head. On first instance, he was very happy because he always wanted to ride a horse, and secondly, he was very much worried. और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी था ये जान के कि उसके पास ये हॉर्स आया कैसे, क्योंकि उसके पास या मुराद के पास या किसी भी गैर कॉलोनियन मेंबर्स के पास इतना अच्छा हॉर्स नहीं आ सकता था, asleep or awake, यहाँ तक के सपने में भी नहीं आ सकता था. Because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it. So now you can get a thing in two ways. Either you have bought it or you have stolen it. तब यही दो चीज़ें उसके दिमाग में रन करी थी कि या तो इसने ख़रीदा आएगा, जो कि ख़रीद नहीं सकता बिकॉज दे वर वेरी पुअर. तो अब ऑप्शन क्या बचता है? ही माइट हैव स्टोलन इट. एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट. लेकिन वो ये भी बिलीव नहीं कर सकता था कि उसने स्टोल किया. वाई? बिकॉज दे कम फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड फैमिली. वो जिस फैमिली से आते थे, पीपल हैव नोन द फैमिली फॉर द ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी. दैट्स वाई उसके लिए ये चीज़ भी बिलीव करना बड़े ही मुश्किल था कि उसने चोरी करी है. नो मेंबर ऑफ द गैरिकलोनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, and this was the fact that none of them could be a thief. I stared first at my cousin and then at the horse. So, as he was very much happy and pleasant, और वो बहुत ज़्यादा जोवियल फील कर रहा था, जॉली फील कर रहा था वो देख के, तो सबसे पहले तो अपने कज़न को देखता है और फिर वो हॉर्स को देखता है. देयर वाज अ तो वो क्या कहता है, देयर वाज अ पायसनेस, एक बड़ा ही मतलब पायस, पवित्रता, स्टिलनेस. तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक पवित्र सी, पायस सी स्टिलनेस थी, एंड ह्यूमर भी था इन ईच ऑफ देम, विच ऑन द वन hand delighted me and on the other hand frightened me. So as I've told you, there were mixed emotions running through Arham's head. On first instance, he was very happy because he was looking a beautiful white horse which he had always dreamt of. और दूसरे इंस्टेंस पे क्या देख रहा था, वो बहुत परेशान था कि फ्रॉम वेयर ही हैव मैनेज टू गेट सच अ ब्यूटीफुल हॉर्स. अब यहाँ पे भी फिर दो पार्ट में चीज़ें डिवाइड हो गई कि या तो उसने ख़रीदा होगा, आइदर ही हैव बॉट इट और ही मस्ट हैव स्टोलन इट. और वो दोनों ही चीज़ें नहीं बिलीव कर सकता था बिकॉज दे वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट अरेंज, दे कुड नॉट अफोर्ड सच अ ब्यूटीफुल हॉर्स. एंड ऑन द सेकेंड हैंड दे वर वेरी मच फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी एंड प्राइड एंड ऑल दैट. तो वो चोरी भी नहीं कर सकता था. तो ये बहुत सारी जो चीज़ें थी वो उसके दिमाग में रन कर रही थी. मुराद, आई सो, वे डिड यू स्टील द हॉर्स. तो वो डायरेक्टर से पूछ ही लेता है कि तुमने ये हॉर्स कहाँ से चोरी किया. लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड. तो उसको बोलता है कि जल्दी से बाहर आओ, लीप आउट, जंप फ्रॉम द विंडो, अगर तुम्हें राइड करना हो. इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स. तो अब जब उसने सवाल पूछा और उसका उसने जवाब कोई नहीं दिया, दैट मीन्स कि उसने वो हॉर्स चोरी किया है. तो उसको एक साइलेंट जेस्चर में अपना आंसर मिल चुका था. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज. और उसने चोरी किया है, वो सिर्फ आया है मुझे इनवाइट करने कि क्या वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है. वेल, इट सीम्स टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स. तो अब यहाँ पे क्या है कि मोरालिटी आ गई है. अब यहाँ पे उसके मॉरल्स में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है बिकॉज सी, मोरालिटी में रिजिडनेस नहीं ला सकते हो, है ना. रिजिडनेस ऑफ मोरालिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन यंग पीपल because it's very difficult that what is moral for you might not be moral for someone else. तो उसकी रिजिडिटी यही होना चाहिए. वहाँ पे हमेशा रिलैक्सेशन होना चाहिए, वहाँ पे हमेशा एक बेंड वाला नेचर होना चाहिए. तो अब यहाँ पे वो अपनी जो उसकी मोरालिटी थी तो उसको थोड़ा सा बेंड करता है. वो बोलता है कि इफ़ यू आर स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड, इट्स नॉट सेम एज स्टीलिंग. वो स्टीलिंग जो सिर्फ राइड के लिए करी जाए, वो स्टीलिंग स्टीलिंग नहीं होती. वाई? सच एस मनी. और वो कंपेयर भी करता है कि जैसे आप मनी चुराते हो, अब क्यों नहीं होती है वो, डिफरेंट कैसे. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल. और फिर वो आगे ये भी कहता है कि वो तो स्टीलिंग बिल्कुल है ही नहीं. इफ़ यू क्रेजी अबाउट, तो वो क्या कहता है, इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग. तो वो कहता है कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा क्रेजी हो, बहुत ज़्यादा आपको वो
चाहिए है वो चीज़, और अगर आप उसको स्टील करते हो, दैट वॉज इन स्टीलिंग. इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफ टू सेल द हॉर्स. और वो आगे ये भी एक्सटेंड करता है इस चीज़ को कि इट विल नॉट बिकम स्टीलिंग अनटिल दे डिसाइड टू सेल द हॉर्स. कि उन्होंने चला लिया, अब इट इज़ नॉट स्टीलिंग. नाउ इफ दे वर ट्राइंग टू सेल द हॉर्स ऑफ, नाउ दिस विल काउंट इन द स्टीलिंग. तो चोरी तो ऑब्वियसली की थी उसने, लेकिन अब वो ये उसको एक अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है, अपनी मोरालिटी को समझा रहा है कि वो तब तक चोरी नहीं होगी जब तक वो उसे आगे बेचते नहीं है. विच ऑफ कोर्स आई न्यू ही वुड नेवर डू. और अरहम बोलता है कि हाँ, इस बारे में मुझे यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेगा. मुराद विल नेवर सेल द हॉर्स. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ, आई सेड. ऑल राइट, ही सेड, बट हरी. तो दोनों में आपस में बात होती है. वो उससे बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं कपड़े पहन के आता हूँ. एंड मुराद टेल हिम टू be quick about it. I leaped into my clothes and he get ready very quickly. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. और वो दौड़ के जाता है और घोड़े के अपने मुराद के पीछे बैठ जाता है. Like two of them were riding the horse. The year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. तो अब यहाँ पे उनका एड्रेस है कि वो कहाँ पे रहते थे. वो वॉलनट एवेन्यू में रहते थे, विच इज़ इन कंट्री साइड. ये कैलिफोर्निया में है, ये जहाँ का ये एड्रेस है. तो दे यूज टू लिव इन वॉलनट एवेन्यू, कैलिफोर्निया. और वो कंट्री साइड में रहते थे. एज ऑफ द टाउन इज कंट्री साइड. बिहाइंड अ हाउस वॉज द कंट्री. और उनके घर के पीछे क्या था? कंट्री. कंट्री इज़ नॉट अ प्रॉपर सिटी, इट्स अ विलेज. Vineyard, orchards, irrigation ditches, and country roads. So they live in a very beautiful place, lush green fields they were having. They were having vineyards, orchards they were having. So they used to live in a very beautiful place. Irrigation ditch थी वहाँ पे और बहुत सी अच्छी चीज़ें थी. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue. तो वो वॉलनट एवेन्यू से ऑलिव एवेन्यू आ चुके थे. एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट. नाउ द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट. ट्रॉट इज रन. अब हॉर्स दौड़ना शुरू कर देता है. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. As it was morning and the surrounding was so lush green and full of scenic beauty, the wind was also pure and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful, and they were enjoying the ride. My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. I mean, he began to roar. और अब वो मूड में आ जाता है मुराद, and he started singing, which was not exactly singing, but he started roaring. He was a very bad singer. Every family has a crazy streak in it somewhere. तो उनकी जो फैमिली थी उन सब में कोई ना कोई क्रेजी स्ट्रीक, यानी कि एक पागलपन वाली जो स्ट्रीक होती है, लाइन होती है, वो हमेशा देखने को मिल जाती है. एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब. और जैसे कि हेरिडिटरी पास होती है वो क्रेजीनेस हर एक मेंबर में, एज द जनरेशन मूव फॉरवर्ड. तो मुराद को समझा जाता था कि वो भी एक नेचुरल डिसेंडेंट है इस क्रेजी स्ट्रीक का, जो उसकी फैमिली में हमेशा से रही है. यानी कि उसकी जो पागलपन का जो एक एलिमेंट था, एक स्ट्रीक थी, ही हैव इनहेरिटेड इस फ्रॉम सम ऑफ द मेंबर ऑफ हिज फैमिली. तो वो कौन थे? बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो. तो उसको वो अपना जो क्रेजी स्ट्रीक था वो किससे मिला था? उसके अंकल से, whose name was Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the large moustache in the San Joaquin Valley. So, here is the character sketch of Uncle Khosrow, that how Uncle Khosrow used to look like. So, let me read this line again. Before him was our Uncle Khosrow, who was considered to be the crazy streak in the family, and he was an enormous man with a huge build and all, and powerful head of black hair, and the largest moustache in up now this word, which is written San Joaquin Valley.
So this is a valley in California, and it is to be pronounced in Spanish. So if we talk about the Spanish pronunciation of this word, it will be San Joaquin. San Joaquin. But as we just read what it's written, so it's San Joaquin. So, but it's originally in Spanish pronunciation, it will be San Joaquin Valley. A man of furious in temper. He was very short tempered, वो बहुत furious था, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. Nobody likes to talk in front of him, because whenever he sees someone talking in front of him, he shouts at the person, and that too in a very roaring tone. And what he says, it's no harm, pay no attention to it. So this was his pet line, which he always used to say to everyone he sees talking in front of him, वो जिसको भी देखता था. He roared at that person saying that it's no harm, pay no attention to it. That was all. No matter what anybody happened to be talking about, once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop, where his father was having his moustache trimmed, to tell him the house was on fire. Okay, so now Aram is narrating a story related to Uncle Khusro, where one fine day he was sitting at the barber shop getting his moustache trimmed, where his son Arak, whose son? Uncle Khusro's son, came running to him, that too from 8 blocks, and he informed him that the house was on fire, कि उनका घर जल रहा है, उसमें आग लग गई है. This man Khusro sat up in the chair and roared. वो एकदम से अपनी, जैसे वो सुनता है खुसरो, वो अपनी चेयर से उठता है और ज़ोर से गुस्से में बोलता है, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. नाउ ही इज सच अ क्रेजी पर्सन that his own house was on fire, and he is not even bothering about it. On that, he is shouting on his own son that is no harm and pay no attention to it. The barber said, but the boy says, your house is on fire. Now Baba was astonished. So he explains Uncle Khusro. The boy says that your own house is on fire, कि तुम्हारा खुद का घर जल रहा है. So Khusro roared. He got angry again. और वो बार्बर पे भी गुस्सा हो गया. Enough. It's no harm. I say. तो उस पे भी गुस्सा होके बोलता है कि it's no harm. I said it. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. और मुराद को भी ऐसा समझा जाता था कि वो इसी आदमी का, यानी कि अंकल खुसरो का एक नेचुरल डिसेंडेंट है. दैट इज दैट ही हैव गॉट हिज क्रेजी स्ट्रीक फ्रॉम हिज अंकल. Although Murad's father was Zorab. And now this is a bit I won't say it's tricky, but it's somewhat slight uh, something which is to be paid attention to. अब यहाँ पे वो कह रहा है although Murad's father was Zorab. Now actually it's seen that the characteristics are always descended upon us by our parents. लेकिन यहाँ पे उनके साथ ऐसा नहीं था. Although Murad's father was Zorab. Murad's father was not Uncle Khusro, but his father was Zorab, who was practical and nothing else. He was a very practical person. That's how it was in our tribe. और यही होता था उनकी ट्राइब में. क्या होता था उनकी ट्राइब में? A man could be a father of his son's flesh. यानी कि फादर ऑफ सन्स फ्लैश मतलब कि ही माइट ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक, द फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू हिज सन. और हम इसको ऐसे भी दूसरे टर्म में समझ सकते हैं कि द फादर हैज़ फुल राइट ऑन हिज सन्स बॉडी, कि वो उसको मार भी सकता है, पीट भी सकता है, अपने ऑर्डर्स भी फॉलो करवा सकता है डांट के पीट के. सो इन दैट सेंस अ फादर इज़ द ओनर ऑफ सन्स फ्लैश, कि उसको डांट भी सकता है, ही कुड इवन हिट हिज सन, मेक हिम डू हिज वर्क एंड ऑल दैट. तो वो ऐसा कर सकता है. बट दैट डिड नॉट मीन्स दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. लेकिन दिस इज़ नॉट श्योर, लेकिन ऐसा ये बिल्कुल श्योरिटी नहीं है इस बात की कि वो उसकी स्पिरिट का, कि उसका जो खुद का नेचर है उसका भी वो फादर होगा. The distribution of the various kind of spirits in a tribe had been from the beginning. तो वो बताता है कि यहाँ पे it's not necessary that the characteristics, the character traits will descend from his father only. वो किसी से भी ट्रांसफ़र हो सकती थी. And in this case
मुराद हैव इनहेरिटेड दिस क्रेजी स्ट्रीक, जो उनकी क्रेजी रेस थी और क्रेजी वाला जो एक एलिमेंट था, ही हैव गॉट दिस फ्रॉम हिज uncle. The distribution of various kind of spirits of a tribe had been from the beginning capricious. तो जो distribution of traits था, ये distribution of characteristics था, ये हमेशा से capricious रहा है, यानी कि बहुत unpredictable रहा था. किसी के भी characteristics मिल सकते थे, जैसे कि अंकल खुसरो के character. Okay, so the distribution of the souls have always been capricious, यानी कि वो हमेशा से ही unpredictable रहा है. ऐसा नहीं है कि जो फादर से ही उसके जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं वो अपने सन में ट्रांसफ़र होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं था. वो कोई भी स्ट्रीक किसी में भी इनहेरिट हो सकती थी, ट्रांसफ़र हो सकती थी. एंड वैग्रेंट इज़ अ पर्सन हु कैन नॉट अफोर्ड अ गुड प्लेस फॉर लिविंग एंड फूड एट्सेट्रा, जिसको हम भिखारी भी बोल सकते हैं, बेगर. Okay, so moving to the next paragraph, we rode and my cousin Murad sang. So they rode and his cousin Murad started singing. For all anybody knew, we were still in the old country were. और वो लोग उस टाइम कहाँ पे थे? वो लोग उस टाइम थे ओल्ड कंट्री में, यानी कि वो जो उनका गांव था, जो उनकी जो प्लेस थी, वो अभी भी वहीं पर ही हॉर्स लेके वहीं पर ही घूम रहे थे वो. एटलीस्ट अकॉर्डिंग